the proof of Green's theorem in the last class. Now we'll do questions on Green's theorem. Right. Verify the Green's theorem for fxy is equal to e raised to the power of minus x sin y, gxy is equal to e raised to the power of minus x cos y, where c is the square with vertices at 0, 0, pi by 2, 0, pi by 2, pi by 2, and 0, pi by 2. This is the question. Now, first of all, you have to draw this square, this figure. This is x-axis, this is y-axis. We have 0, 0 here, and then pi by 2, 0. Pi by 2, pi by 2, 0, pi by 2. ठीक, ये बना. और हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, काउंटर क्लॉकवाइज. So this is counter clockwise direction. So we have 4 curves. This is curve C1, this line. This is C2, this is C3, and this is C4. Now, what is Green's theorem? Green's theorem, first we have to find out f dx plus g dy over the closed curve C. Now, closed curve is this square. So, this will be integral over C1 plus integral over C2 plus integral over C3 plus integral over C4 in the counterclockwise direction of this function f dx plus g dy. ठीक, सब अलग अलग लिखोगे, हमने एक ही साथ लिख दिया है शॉर्ट में. ठीक, तो now along C1, first of all, first integral along C1. Now, what is the equation of the line along C1? This is x-axis, so this is y is equal to 0. And x varies from 0 to pi by 2. ठीक, this is C1. From 0 to pi by 2, x varies. So, what is the value of f dx plus g dy? This will be integral e raised to the power of minus x sin y dx plus cos y dy. Now y is 0, so dy is also 0 along C1. This value will be 0. Take, and we have to find this value. Take along C1. So calculate the value of this. Now y is 0. So y is 0, again sin y becomes 0. So this whole integrand is 0. So this is 0. ठीक है, ये sin y 0 हो गया और यहाँ पे ये dy 0 हो गया. So therefore the whole integrand is 0. Clear everybody? Yes, ma'am. Now C2. Yes. Here we can divide the entire C into sharp intervals because it is a square. But for other geometries, it may or may not be possible.
कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो होगी ना, ये तरीका नहीं होगा तो कुछ और होगी। जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो होगी ही होगी। ओके मैम, ओके। ओके, सो अलोंग C2 निकालो फिर इसी तरह। अलोंग C2, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन C2? x equals to pi by 2. x equals to pi x by is 2. equal to pi by 2. y So there x is is equal 0, to pi by 2 means dx is again 0 along C2. Now y varies from 0 to pi by 2. ठीक, so again along C2 you have to calculate e raised to the power of minus x, x is pi by 2, into sin y dy plus cos y sin y dx, sin y dx plus cos y dy. This you have to calculate. So dx is 0. So now you can calculate the value of e raised to the power of minus pi by 2 cos y dy. ठीक, निकाल लो e raised to the power of minus pi by 2। आ रहा है कि नहीं? Now, Yes, ma'am. along C3 निकालो इसी तरह। Now what is C3? C3 is the line y is equal to pi by 2, along C3. Now C3 is the line y is equal to pi by 2. So this means again dy is equal to 0 and x varies from pi by 2 to 0. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, तो x varies from pi by 2 to 0 in this direction. So along C3 we have e raised to the power of minus x sin y dx plus cos y dy. Now dy is 0, so we have sin, now again sin pi by 2, इसकी वैल्यू रख के एंड e raised to the power of minus x dx की वैल्यू निकाल लो। So this will be from pi by 2 to 0 e raised to the power of minus x dx. ठीक, pi by 2 से 0 क्यों जा रहा है ये क्लियर है ना? So this is e raised to the power of minus pi by 2 minus 1. Yes, ma'am. Now along C4, now what is the equation of the line C4? This is y-axis, so x is equal to 0, and this means dx is also 0, and y varies from pi by 2 to 0 in the counterclockwise direction. So this is along C4 e raised to the power of minus x sin y dx plus cos y dy. This you have to calculate. So this is equal to x is 0. So e raised to the power of minus x, this becomes 1. And dx is also 0, so this is 0. So you have cos y dy from pi by 2 to 0. This is minus 1.
तो होल कर्व पे एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू एडिंग ऑल these C1, C2, C3, C4 सबको ऐड कर लो, तो हमें क्या मिला? दिस इज इक्वल टू 2 times e raised to the power of minus pi by 2 minus 1. ठीक है? Now suppose this is equation number 1. Now you have to calculate double integration over the region R, the left hand side of Green's theorem, right hand side of Green's theorem, del G by del X minus del F by del Y dx dy. Calculate करो. Now square है, तो this is del G by del X minus del F by del Y निकाल लो. So this is minus e raised to the power of minus x cos y minus e raised to the power of minus x cos y dx dy. अब dx dy की लिमिट्स देख लो. dx पहले है, so you take a strip parallel to x axis. ये लिया. So x varies from this line to this line. This is x is equal to 0. This is x is equal to pi by 2. And similarly, y also varies from 0 to pi by 2. So here we have 0 to pi by 2. And this is 0 to pi by 2. Now you can integrate and get the answer. जल्दी बताओ कितना आएगा. Ma'am, 2 times of e to the power minus pi by 2 minus 1. वही आया जो इक्वेशन नंबर 1 में आया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So since 1 is equal to 2, therefore Green's theorem is verified. ठीक. Next question. Evaluate closed integral over the curve C x square plus y square dx plus y plus 2x dy. So this is f and this is g, where C is the boundary of the region in the first quadrant that is bounded by the curves y square is equal to x and x square is equal to y. ठीक. So these are two parabolas and this is the boundary of this curve. The region of intersection of boundary of these curves is
the curve C. तो अब सेम क्वेश्चन अप्लाई हो गया, जो अभी एक कंफ्यूजन आपने पूछा था कि अभी वो कर्व था हमारा स्क्वायर, तो हमने उसे डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक कर लिया था। अब अगर कोई ऐसा कर्व हो जिसे हम ब्रोक करने के बाद इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल हो, तो फिर कैसे करेंगे? ठीक, तो अब हम इसमें हमारी वेरिफिकेशन की तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसमें पूछा गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई। नाउ वी विल यूज Green's theorem and transform this into double integration. And how to calculate double integration in the closed region, this we have studied. So इसका solution. So first you find out the region of the points of intersection of these two parabolas. 0, 0 and 1, 1. 0, 1, 1. Yes, ma'am. Ma'am, 0, So 1. the curve intersects at 0, 0 and 1, 1. Now what is the value of fxy? This is x square plus y square, and the value of gxy, this is y plus 2x. So you can calculate del g by del x and del f by del y. Del g by del x, this is equal to 2, and del f by del y, this is equal to 2y. So by Green's theorem, closed integration over the closed curve C, the x square plus y square dx plus y plus 2x dy, this is equal to, now del g by del f, del g by del x minus del f by del y, so 2 minus 2y dx dy. Okay, now x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? फ्रॉम वन कर्व टू अदर कर्व, From y square to root y. हाँ, so this value vary from y square to root y, and this from 0 to 1. निकाल लो। हो गया इंटीग्रेशन? मैम 11 by 30. 11 by 30 आ रही है। Yes, ma'am. 11 by 30. Ma'am, so it is 11 by 30 square units. हाँ, 11 by 30. Now coming to, so these are the two types of questions with which come in Green's theorem. Either you have a question to verify Green's theorem, or you have a question to apply Green's theorem. Now coming to surface integrals. Now this was हाँ, अगर इसमें अप्लाई करना होता सॉरी वेरीफाई करना होता तो क्या करते? अब इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन का तो आएगा नहीं ना, और कैसे बनेगा? आप वेरीफाई कैसे करोगे? तो जो कर्व आपको दिया रहेगा उसमें आप वेरीफाई कर पाओगे, तभी दिया रहेगा।
Now surface integrals. Now what are surface integrals? Surface integrals can be evaluated in any one of the following ways. Now if we are coming to surface integrals, means we are coming to 3D, क्योंकि सरफेस आपको 3D में ही तो मिलेगी. ठीक, तो सरफेस इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होगा? लेट S be represented, this is the surface over which we have to calculate the integral, represented in parametric form. R is equal to R uv, then R is the position vector, double integration over the surface x, g x y z dA, this is equal to R star g x uv y uv z uv into determinant of Ru cross Rv du dv. हम इसको नीचे लिखे दे रहे हैं, बहुत छोटा सा हो गया है. du dv. Now what is this Ru Rv and where Ru is equal to del R upon del U, Rv is equal to del R upon del V. तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो क्या आएगा ये? Ma'am, the mod of Ru cross Rv is the Jacobian equivalent. हाँ, वही होगा. तो दिस इज जी एक्स यूवी वाई यूवी जेड यूवी आर यू स्क्वायर आर वी स्क्वायर रखोगे निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी, माइनस आर यू डॉट आर वी का होल स्क्वायर पावर हाफ डी यू डी वी. ठीक. Now what is R star? R star is the region corresponding to S in the UV plane, where R star is the region corresponding to S in the UV plane. ठीक. Now next, if the surface is represented by the equation of the type z is equal to function of x and y, then how you calculate the surface integral? gxyz dA this is equal to double integration over the region R g
xy, and this is fxy, and then you have 1 plus fx square plus fy square पावर हाफ dx dy. ये वही वैल्यू है आर यू क्रॉस आर वी की ही, लेकिन if z is written in the form of fxy then this comes out to be this value. ठीक, तो सिंपली सिर्फ उसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है बस. वेयर आर इज द एक्स ऑर्थोगोनल. स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 लिया है क्या? नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 क्यों लेंगे? z की जगह बस एफ एक्स वाई लिखा है और आर यू क्रॉस आर वी की वैल्यू, if z is a function of x and y then this comes out to be this. Orthogonal projection of S in xy plane. ठीक, z से जब प्रोजेक्शन लोगे, z एक्सिस से प्रोजेक्शन लोगे xy प्लेन पे, पूरे मतलब z एक्सिस क्या पूरे पे जो फिगर है इस पे आप अगर खाली xy प्लेन पे आप प्रोजेक्शन लेते हो तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ही होगा. तो दिस इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इन xy प्लेन. थर्ड इज, अभी फॉर्मूले लिख लो, फिर जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो ज्यादा क्लियर होगा. अगेन इफ s is represented by equation of the type y is equal to a function of x and z, then how you calculate the surface integral? Then gxyz dA, this will be double integration over the region R, g x h1 xz, and here z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 plus h1 whole square and then h1z whole square and इसकी पावर हाफ dx dy. Where dx dz. हाँ dx dz, sorry, dx dz, where R is the orthogonal projection of S in xz plane. Now third क्या बचा? X is a function of y and z. Third, fourth. Now if S is represented of in the form of equation of the type h is a function of y and z, then double integration over the surface S gxyz dA, this is equal to over the region R g h y z y z, and अंदर क्या बचा 1 plus hy whole square plus hz whole square power half dy dz. Now what is R? R is the orthogonal projection in the yz plane, where R is the orthogonal projection of S in on yz plane.
The next formula is mass of a surface. Now, what is mass of a surface? M is double integration over the surface x, rho xyz dA. Now, what is rho xyz? Density, where rho xyz is the density of the surface S at any point, or mass per unit area, per unit surface here. Now, similarly, moment of inertia, I is equal to double integration over the region S, surface S, rho xyz d square dA. Now, what is d square? This is equal to d square is the, first you write and then I will explain what is d square. Over the region is d square dA. Now, what is d? D is the distance of this xyz from the reference axis L. xyz from the reference axis L. जो भी आप एक्सेस ले रहे हो उससे डी का उससे पॉइंट का डिस्टेंस. ठीक, तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द मास of the surface of the cone z is equal to 2 plus under root of x square plus y square, and z varies from 2 to 7. In the first octant, if the density rho xyz at any point of the surface is proportional to its distance from the xy plane. ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन में बोल दिया गया है एक्स वाई प्लेन मीन्स आपको z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाला सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला लेना है, प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे लेना है. ठीक, now this is given that rho xyz, this is the density, this is proportional to distance from the xy plane. Distance from the xy plane क्या होता है? Z coordinate of the point. So this is proportional to Z. So this means we have rho xyz, this is equal to c into Z, where c is a constant. Now we have, it is given that Z is a function of fxy. This is 2 plus under root of x square plus y square, ये given है. तो यहाँ से हम fx निकाल सकते हैं, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और fy निकाल सकते हैं, y इज अंडर रूट y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर.
So now what is R? R क्या होगा इसमें? Projection of S in the XY plane. So this is projection of S because Z is a function of fxy here on XY plane. तो ये क्या हो जाएगा? We have this equation x square plus y square. This is z minus 2 whole square. Now z varies from 2 to 7. It is given. So when you take the projection, what you do, you put the maximum value. So z is z minus 7 minus 2 whole square. This is 25. So what is the projection of S on the xy plane? This will be x square plus y square is equal to 25. ठीक, this in the first quadrant. फर्स्ट ऑक्टेंट था, तो अब जब प्रोजेक्शन लोगे तो किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ऑक्टेंट से. मैम हम्म, मैम इसको रिपीट कर दे एक बार. जो सरफेस दी हुई है, सरफेस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, दिस इज है ना, z is equal to 2 plus under root of x square plus y square. Now and z varies from 2 to 7. Now you have to take the projection of this surface on the xy plane. So xy plane पे जब projection लोगे, z vary कर रहा है 2 से 7 तक, तो इसका projection क्या आएगा? z is equal to 2 से z is equal to 7 तक वैरी कर रहा है, तो प्रोजेक्शन क्या आएगा? यू पुट द मैक्सिमम वैल्यू 7, z इज इक्वल टू 7, तो ये आया. ठीक, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यू हैव टू बी इन द फर्स्ट ऑक्टेंट ओनली. ये है ना, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट. तो फर्स्ट ऑक्टेंट में हो जब 3D में हो, तो इसका प्रोजेक्शन जब आप एक्स वाई प्लेन पे लोगे तो फर्स्ट ऑक्टेंट से किससे चले आओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. QUA स्पेलिंग सही करो. Now you have to calculate the mass. तो mass का फॉर्मूला लगाओ. Mass is double integration over the surface as Cz. This is the density dA. Now put the value of Z. This is over the region R. 3 times 2 plus under root of x square plus y square over the region R dx dy. मैम अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. हाँ, वो तो अंडर रूट 2 हो जाएगा ना, इसको लिखते हैं डायरेक्ट अंडर रूट 2. dA जब निकालोगे तो दिस विल बी अंडर रूट 2 इंटू dx dy. नाउ इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, एंड r वेरीज फ्रॉम, प्रोजेक्शन हमारा क्या आया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो r वेरीज फ्रॉम 0 to 5 एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to pi by 2. सर्किल है ना.
मैम हाँ, ये √2 वाला मैम पॉइंट बता दो कहाँ से है। डीए कैसे निकालोगे? ये डीए एरिया ऑफ द सरफेस। Yes, ma'am. The final answer has got a C in it. सी तो आएगा ही ना, सी तो कांस्टेंट लिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हुआ, 2 + r इंटू r dr d थीटा, dx की वैल्यू r dr d थीटा, ठीक। और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 and r varies from 0 to 5. So this is 100 √2 upon 3 pi c, यही आ रहा है। No, ma'am. There will be a pi square and a pi cube because r square dr and r dr. तो r की वैल्यू नहीं रखोगे 0 to 5? Oh, okay, ma'am. Got it. यस मैम सही है। यस मैम आ रहा है। So now next is flux of a vector field V through a surface S. Let Vxyz, this is equal to V1xyz I plus V2xyz j plus V3xyz k be a vector field representing the velocity field of a fluid. The total volume of the fluid velocity field of a fluid. The total volume of the fluid flowing through S is the surface per unit time is called the flux of V through S.
and is given by double integration over the surface S v dot n cap dA. Now what is n cap? Where n cap is the unit normal vector to the surface S. तो इस पे क्वेश्चन कर लें जल्दी से. Okay, ma'am. Question is evaluate the surface integral f dot n cap dA. ठीक, फ्लक्स पूछा है. सिंपल आपसे फ्लक्स भी पूछा जा सकता था. मींस फ्लक्स ऑफ द वेक्टर f, ये भी पूछा जा सकता था. यहाँ पे क्वेश्चन में दे ही दिया है कि आपको ये इंटीग्रल निकालना है. तो f is given 6zi plus 6j plus 3yk and s is the portion of the plane two x plus 3y plus 4z is equal to 12, which is in the first octant. So here fxyz is given 2x plus 3y plus 4z minus 12 is equal to 0. ठीक. So what will be n cap? This will be gradient of f upon mod of gradient of f. Now you calculate this. I am writing because the time is less, so I am writing the यूनिट वेक्टर. ये आएगा, आप निकाल लेना एन कैप जब निकालोगे तो. Now in the first octant means portion of the plane in the first octant. Now first you have to take the projection of, because you have to calculate the surface integral. You want to come to the from 3D to 2D. So what will be R? R will be the projection of S on XY plane. I am taking on the XY plane. You can take on any other plane also. So इस सरफेस का जब आप प्रोजेक्शन लोगे XY प्लेन पे, दिस इज द प्लेन, एंड व्हेन यू टेक द सरफेस ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन द XY प्लेन, तो हमें क्या मिलेगा? ये है हमारा सरफेस. फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना है बस खाली. तो फर्स्ट ऑक्टेंट पे कुछ ऐसा मिला हमें. दिस इज द सरफेस. ये है सरफेस एस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. नो, अब जब इसका प्रोजेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा? एक ट्राइंगल मिलेगा. ये है, ये वाला ट्राइंगल मिला. एक्स वाई प्लेन पे लेना है बस खाली एक्स वाई. ठीक. सो दिस इज y इज इक्वल टू 0, दिस इज z इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2x plus 3y is equal to
12. So on the xy plane, this is, which is a triangle bounded by x is equal to 0, y is equal to 0, and 2x plus 3y is equal to 12. ठीक. Now you calculate the value of dA. dA क्या होगा? dx dy upon n cap into x और y के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? k cap. So this is equal to dx dy upon 4 upon root 29. Then you calculate the value of n cap into k cap. Now अब उस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लो. डबल इंटीग्रेशन f dot n cap dA. ठीक. So this will be 1 upon root 29. अंदर क्या बचा? 12z plus 18 plus 12y dA. f dot n cap निकालोगे तो वैल्यू ये आएगी. Now put the value of dA. dA we have calculated in terms of dx dy. So this will be 1 upon 4. अंदर बचा 54 minus 6x plus 3y dx dy, and x की वैल्यू फिर वही x इस ट्राइंगल में x एक्सिस के अलोंग एक स्ट्रिप ले लो. ठीक है. तो जब आप स्ट्रिप लोगे तो y की वैल्यू y एक्सिस के अलोंग, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 0 to 12 minus 2x upon 3, and this varies from 0 to 4. X varies from 0 to 4. इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आए ये क्लियर है ना? वी हैव यूज्ड Okay. दिस. हाँ, Thank you. ये है हमारे पास. तो इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो 138 आएगा. चलो ठीक है. सो यू कैन लीव फॉर योर नेक्स्ट क्लास. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am? ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.